So, welcome back to another live session of learning Python. So, we are learning Python through the official document of doc, official documentation of Python, and currently we are at section 4.7, and नेक्स्ट चीज जो आज हम करेंगे वो है मैच स्टेटमेंट्स. So what is this match statements? A match statement takes an expression and compare its value to successive patterns given as a one or more case blocks. So what it actually do, this is the match keyword, and the status is a, we can say it's a kind of expression, और इस expression को हम इसके जो इसके बाद जो मैच के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो हैं केस स्टेटमेंट्स, और जो एक्सप्रेशन अगर ये किसी भी पर्टिकुलर केस से मैच कर जाएगी तो मैच करने पर उस केस के अंदर जो भी आपके कोड्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. और एक और केस है जो लास्ट में आप देखेंगे. It looks like that if none of the case match, then this will act as a default case. मतलब कि ये लास्ट इसमें लिखा हुआ भी है, note the last block on the variable name this act as a wildcard or and never fail to match. अगर ये match नहीं हुआ तो this will definitely is going to be match. So let's write a program for it. We have learned about for loop in previous live session, and right now we are learning about match, how match statement works in Python. Okay. So let's write match keyword, and there is a expression here, some expression like morning, for example. Let me change it to a Python. All right. And we have case here, morning. So what it do, it print good morning, and we have another case here,
So evening, then we should print good evening. तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ तो ये हमारी एक्सप्रेशन है जिसे हमें मैच कराना है केस से, और ये पहला केस ही हमारा मैच कर रहा है. सो द प्रोग्राम शुड प्रिंट गुड मॉर्निंग. लेट्स चेक इट. तो ये फर्स्ट कोड डॉट पी वाई ये हमारी है फाइल नेम. लेट्स कंपाइल इट. पाइथन and first code.py. At line 7 there is a syntax error. Let's check what wrong we've done. केस के आगे भी हमें कॉलन लगाना है. Don't forget to add colon after case. So let's recompile again. So you can see here it prints good morning because this case matches with this expression. Let me just change it to evening, then it should print good evening. Alright, there is a default case in. We have a default case like this. So अगर कोई सी भी आपकी एक्सप्रेशन मैच नहीं होती है, in this case ये लास्ट वाला आपका केस एग्जीक्यूट होगा. None. Let's do it. And यहाँ पे हम कर देते हैं नाइट, और यहाँ पे मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट का कोई केस ही नहीं है. let's check what our program prints. So it prints none because none of the case matches, so the default case gets executed. So this is all about match statement. अगर आपका कोई वेरिएबल भी मैच करा सकते हैं, वी कैन पॉइंट, जैसे पॉइंट आपका वेरिएबल एक्स वाई कोऑर्डिनेट स्टोर करता है, तो वो भी आप मैच करा सकते हैं यहाँ पे. व्हाट इज इट इज सेइंग. Alright, this goes to section 4.8 function.
functions in Python. तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो होता है डेफ. डेफ इज शॉर्ट फॉर डेफिनेशन. डेफ का हम यूज करते हैं फंक्शन क्रिएट करने के लिए. ओके सो कोई फंक्शन मैं बनाता हूँ. डेफ सम नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर 2 वेरिएबल मैंने पास कर दिए हैं. और उसके बाद कॉलन को आपको नहीं भूलना. इट्स अ बिगनिंग of a function. Then now after that next line starts the body of that function. So body में हम क्या कर रहे हैं, x और y की वैल्यू को c वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. Then we're returning or let's print. We are printing the value of c. अगर हम तो ये हमारा फंक्शन हो गया. अगर हम एग्जीक्यूट कराते हैं इस फंक्शन को, डेफ कीवर्ड का यूज़ करके हमने फंक्शन बनाया है. अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं सो इट इज़ नॉट प्रिंटिंग एनी वैल्यू. ये एग्जीक्यूट हमारा प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हुआ है बट इस फंक्शन ये फंक्शन हमारा रन नहीं किया है क्योंकि हमने इसे कॉल ही नहीं किया है. सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन. तो कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन नेम प्लस उसके अंदर हम जो भी पैरामीटर्स हैं उसकी वैल्यू हमें पास करानी होगी. 10 एंड नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू हम 10 देते हैं और y की वैल्यू जस्ट गिव इट 5. तो ये हमने फंक्शन डिफाइन किया. नाउ हियर डिफाइन फंक्शन और यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. कॉलिंग द फंक्शन. So let's compile it again. Now it's our function runs and it prints the value of c, that is 15. So this is how we execute we create a function. def कीवर्ड का यूज करके फंक्शन बनाते हैं और जो फंक्शन कॉल करते हैं वो फंक्शन नेम. अगर हमने पैरामीटर पास फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू देंगे उनकी और फंक्शन क्या है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा. यहाँ हम फंक्शन ये फंक्शन क्या कर रहा था, सी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा था. और अगर हमें वैल्यू को रिटर्न कराना है तो हम रिटर्न भी करा सकते हैं. इंस्टेड ऑफ प्रिंट लेट्स जस्ट रिटर्न द वैल्यू ऑफ सी. अब ये क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न कर देगा सी की वैल्यू को. और लेट्स से उस वैल्यू को हमने डी में स्टोर करा दिया. फंक्शन कॉल किया और डी में वैल्यू स्टोर करा दी और फिर क्या किया हमने, डी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया यहाँ पर.
सो लेट्स कंपाइल। तो अब ये यहाँ से प्रिंट कर रहा है वैल्यू। इस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की डी को, और डी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 15। ओके, सो इस तरह से आप पाइथन में फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन आपका रिटर्न टाइप भी हो सकता है, रिटर्न भी कर सकता है वैल्यूज़ को। तो यही इस डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने बताया है, फंक्शन को कॉल करना और जो भी फंक्शन अपनी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है उसे प्रिंट करना। तो मैंने एक इजी प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट किया है। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इन्होंने एज एग्जांपल लिए हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट with some easy programs. Okay, so let's move on to next sections. Hmm. ओके, सो फंक्शन हमने देख लिया, फंक्शन क्या होते हैं पाइथन में, कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ सेक्शन पे, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो लिस्ट मैंने बताया, लिस्ट तो हम पहले भी देख चुके हैं। लिस्ट में इस तरह से आप लिस्ट क्रिएट करते हैं। यही एग्जांपल ले लेते हैं। सो एक हमारी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी फ्रूट्स की, उसके अंदर आपके फ्रूट्स होंगे, ऑरेंज, एप्पल, लाइक दैट।
अब इस लिस्ट जो क्रिएट हुई है इसके अंदर भी लिस्ट में हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक अपेंड। किसी आइटम को अगर ऐड करना है हमें तो अपेंड का यूज़ करके हम किसी नए आइटम को भी एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स प्रिंट फ्रूट्स, प्रिंट करके देख लेते हैं लिस्ट को। तो सारे आइटम्स को प्रिंट कर दिया है। ओके, तो अपेंड करके देखते हैं। हाँ, अपेंड अपेंड। अब नया आइटम इसमें ऐड करते हैं जो इसके अंदर ना हो। Let's add mobile, different item to it and compile। तो आप देखेंगे लास्ट में मोबाइल भी ऐड हो गया यूजिंग अ पेन। तो पेन मेथड का यूज करके हम आइटम्स को एग्जिस्टिंग लिस्ट में आइटम को ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंड कर सकते हैं एंड किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें वैल्यू को स्टोर करना है। जो लिस्ट है आपका वो हर आइटम का एक इंडेक्स होता है। तो फर्स्ट आइटम का इंडेक्स आपका होता है 0, नेक्स्ट आइटम इंडेक्स 1। तो इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें इंसर्ट करना है तो हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। सो लेट्स डू इंडेक्स मेथड और ऐड इंडेक्स 1 पे किसी आइटम को स्टोर करते हैं, कंप्यूटर को ऐड करते हैं। हम्म, 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 हम्म। slice index must be integer। इंटीजर तो दिया था लेकिन what's the issue? ओके, यहाँ पे इंसर्ट होना है आगे इंडेक्स। ओके, राइट। सो ऑरेंज, ऑरेंज के बाद कंप्यूटर आ गया, देन एप्पल। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया ऐड इंडेक्स 1 पे कंप्यूटर। सिमिलरली किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आइटम को रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल जो एप्पल देखेंगे आप, हमारे 2 हैं एप्पल। तो 0 1
2 3 4 5, एक फिफ्थ इंडेक्स पे और एक फर्स्ट इंडेक्स पे है। अगर हम इसे रिमूव कर देते हैं, तो एक फर्स्ट इंडेक्स पे एक फिफ्थ इंडेक्स पे, तो अगर एक एप्पल को हम रिमूव कर देते हैं तो हमें रिमूव मेथड का यूज करना होगा। अगर हमें रिमूव करना है तो ओके, इंडेक्स का यूज रिमूव। अगर हम खाली वैल्यू देते हैं तो ये फर्स्ट जो भी मैच कर जाएगी पर्टिकुलर आइटम को रिमूव कर देगा। रिमूव आइटम एट द गिवन पोजीशन इन द लिस्ट। रिमूव द आइटम एट द गिवन पोजीशन in the list and return it. If no index is specified, pop remove and return the last item. Okay, pop particular index को remove करेगा। अगर खाली remove करना है, remove first item from the list whose value equal to whose value is equal to given value, तो ये इस first value को remove करेगा। ऑरेंज और पियर के बीच से एप्पल गायब कर देगा। Let's remove one apple. So you can see एक एप्पल जो मैच हुआ वो रिमूव कर दिया इसने। ऑरेंज और पियर में से एप्पल को रिमूव कर दिया। ओके, अगर हमें पर्टिकुलर इंडेक्स पे रिमूव करना है एप्पल को, इंडेक्स जो फिफ्थ है वहाँ पे हमें रिमूव करना हो एप्पल को, तो हम कैसे करेंगे? इस पर्टिकुलर एप्पल को अगर रिमूव करना हो हमें, तो हम यूज़ करेंगे पॉप का और इंडेक्स 5, और अभी खाली इंडेक्स ही देते हैं इसे। Let's see if it can remove it. Okay, so after kiwi there is no apple, so it has removed. Using this pop method we have removed this apple. We want to remove all the items, and we have to use
here method. You don't need to pass any variable inside it. Um, I shouldn't print anything because after executing this line, there will be no item in this list. Let's check. So now the list is empty. Alright, clear method. Yes. So there is another method that is called count. It returns number of items, number of returns the number of times value appear in the list. Okay, अगर particular value को हम pass करा देते हैं अंदर, so it will return the number of times the value appear in the list. So सबसे पहले एक और एप्पल करा देते हैं. तो हमारे पास 3 एप्पल हो गए. 1 2 3. Okay. Now let's print food count. और क्या हमें काउंट करना है? Apple. How many apples are there in the list? So let's returns 3. So we have total 3 apples in the list. We can also sort the items. Okay, none. We have to pass some arguments. Okay, leave it. Sort the item of the list in place. The argument can be used for short customization. Leave. One more time. Okay, so this is how list work, and we can use list as a stack. And we can list can also be used as a queue. So let's try. It's easy to use list as a step. We need only two operations: append
to push the item in the stack, and pop to remove the item from this stack. It remove the last item. Always remove last item if we are not passing any uh, argument to this method. Let's try to. I can show you how easy it is to implement a stack in Python using list. So this is a list, simple list in Python, and we are using the old method जो भी हमने पढ़े हैं वही method हम use. तो 3, 4, 5 हमारे पहले से ही आइटम्स लिस्ट के अंदर हैं, देन हम 6 इसमें इंसर्ट करते हैं. टोटल जो आइटम्स हो जाएंगे वो हमारे स्टैक के अंदर हो जाएंगे 3, 4, 5 एंड 6. 3, 4, 5, 6. लास्ट आइटम जो है वो है हमारा 6. So that is 6 is the last item, last in. So अगर हम pop करना चाहें तो this will be the first item to be removed, to be popped. So stack dot pop के बाद अगर हम प्रिंट करते हैं pop ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर हम प्रिंट करते हैं तो this item 6 is going to be removed and we'll get only 3, 4, 5. So the first print statement we have, we append 6, and the last print statement we popped the 6. So remaining items are 3, 4, 5, and if we perform 2 of pops continuously, then we will left only 3 and 4. This item will be removed. We will left only 3 and 4. So this is how easy it is to use list as a stack. Then we can use list as a queue. तो ये तो हमारा स्टैक था. अगर हमें एज ए क्यू लिस्ट को यूज़ करना है यूजिंग लिस्ट एज ए क्यू, तो उसके लिए वी हैव टू इंपोर्ट this dq method from collections is a library, and we are importing the dq. Okay. This will create a queue. Eric, John, and Michael. So queue means first in, first out. It's work as a FIFO, first in, first out. So Eric came first, so
will be out first. Add uh, uh, more people to the queue. Carry ground. Now print how many people are there in our queue. It will print the entire queue. So we have Eric, John, Michael, Terry, and Graham. So let's pop from left. So this Eric came first is going. It will be removed first. Now let's print it again after pop operation. So now the John will be the first in the queue after that. So now the John is at first in the queue and Eric is removed. So this is how we can use list as a queue. We can also use it as a stack. And there are number of useful operation we can perform in list. This is how we create list, just like an array. We create list in Python. And if we want to create a dynamic list, we can do it using this is a program which creates dynamic list, add items through program through this loop. I think this is it for now. कल फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे